नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नकमा। और इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस नेताओं को जो राम मंदिर उद्घाटन का न्योता मिला था वो उन्होंने ससम्मान अस्वीकार कर दिया है। तो मंदिर उद्घाटन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नहीं जाएंगे। ये भी कहा है कि ये बीजेपी और संघ का कार्यक्रम है। बीते महीने उन्हें न्योता दिया गया था, लेकिन सम्मान के साथ न्योता को अस्वीकार करते हैं। सोनिया गांधी को भी न्योता मिला था और खड़गे को भी न्योता दिया गया था, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस न्योते को स्वीकार नहीं करेंगे और मंदिर उद्घाटन में नहीं जाएंगे। तो ये बात जो है कांग्रेस ने अब साफ की है। हालांकि न्योता कांग्रेस को मिले हुए काफी समय हो चुका है। इस पर अब क्या कह रहे हैं, प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं, बीजेपी के नेता क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि नलिन कोहली ने इस फैसले को, कांग्रेस के इस फैसले को कैसे देखा है। अब जब औपचारिक रूप से यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता 22 तारीख को अयोध्या नहीं जाएंगे, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे यह हो जाता कि उनकी इच्छा थी कि अयोध्या में एक विशाल मंदिर भगवान श्री राम के लिए बने। कोर्ट में देरी हो उसकी उनकी इच्छा थी। हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट के सामने कांग्रेस यूपीए सरकार ने कहा कि भगवान श्री राम तो काल्पनिक है। उन्हीं के सहयोगी दल रोज सुबह शाम अलग अलग चीजें कहते हैं भगवान श्री राम, भगवान को लेके, हिंदू धर्म को लेके, सनातन धर्म को लेके। तो आज जब कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि उनका नेतृत्व वहां नहीं जाएगा, ये आरएसएस या किसी और संगठन से लेना देना नहीं है। ये तो कांग्रेस की मूल सोच से ही मिलती बात है, क्योंकि अगर उनकी इच्छा होती या उनकी श्रद्धा होती भगवान श्री राम के प्रति, तो ना तो वो मंदिर बनने में कोई देरी या कोई दिक्कत करते और ना ही 22 को वहां जाने के लिए मना करते। तो ये कांग्रेस पार्टी की सोच है, उनका अधिकार है, उन्होंने उसे स्पष्ट। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लोग ये नाम से भी नकली हैं और भावनाओं से भी नकली हैं। एक हमने कहावत सुनी थी कि रोने वाले को ना बस रोने का बहाना मिलना चाहिए। तो जिन लोगों ने राम को पहले ही काल्पनिक सिद्ध करने के लिए लड़ाइयां लड़ी हों, जिन्होंने भगवान राम का मंदिर न बनने के लिए बड़े बड़े वकील खड़े किए हों सुप्रीम कोर्ट में, वो आज किस मुंह से जाएंगे? ये तो न्यास का बड़प्पन है कि उन्होंने ऐसे कई लोगों को न्योता भेजा है। हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत। प्रशांत, कांग्रेस को न्योता मिला, लेकिन इसे स्वीकार या अस्वीकार करने में इन्होंने काफी समय लगाया। इस पर जाहिर है कि बीजेपी का ये कहना है कि ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस भी इसे आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम बताते हुए कह रही है कि हमारे लिए जो धर्म है वो एक जातिगत चीज है, ये इस इवेंट में हम शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस के इस फैसले को काफी समय भी लगा है, काफी इस पर मंथन हुआ है, क्योंकि उनके एलाइज तो कई जाने को तैयार हैं। जी देखिए नगमा, कांग्रेस की मुश्किल मुझे लगता है हम लोगों को समझनी पड़ेगी। कांग्रेस के नेता ये मानते हैं कि जो ये 22 जनवरी को जो कार्यक्रम है उसका कुछ ही महीने बाद जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उस पर असर पड़ने वाला है। ये कांग्रेस के नेता भी मानते हैं। जाहिर तौर पर कांग्रेस को ये लगा होगा, और जो मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी के बीच इस मुद्दे पर बातचीत भी हुई है, ये हमें सूत्रों ने बताया है। तो नेताओं को ज़रूर ये लगा होगा कि अगर वो जाते हैं तो चूंकि वो खुद ही कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस का ये कार्यक्रम है और बीजेपी इसको पॉलिटिसाइज कर रही है, तो कांग्रेस नेताओं का ये मानना रहा कि इससे साफ तौर पर बीजेपी और मोदी सरकार को इलेक्टोरली चुनावी फ़ायदा उनको होने वाला है। तो कांग्रेस के लिए एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति थी। उन्होंने, मुझे लगता है कि ये रास्ता इसलिए चुना क्योंकि
उनका जो एटलीस्ट जो वोटर है उन तक वो मैसेज ज़रूर ये देना चाहते हैं कि वो एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, वो किसी एक धर्म से नहीं जुड़े हैं और उनका जो वोटर है कम से कम वो उनके हाथ में रहे। यही इसी तरह से हम, मुझे लगता है, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कांग्रेस पार्टी का जो डिसीजन है। इसको राजनीतिक तौर पे ही कांग्रेस पार्टी का ये फैसला हुआ है, क्योंकि वो भी मानती है कि इसका चुनावी फ़ायदा बीजेपी और मोदी सरकार को मिल सकता है और इसलिए उसे इस मुद्दे पर फिलहाल दूरी बनाए रखनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है देरी भी हुई है इस फैसले को लेने में, और ये बड़ा फैसला है, कड़ा फैसला है, लेकिन कांग्रेस को लेना पड़ा है। जी, आप सही कह रहे हैं प्रशांत कि उनको ये लग रहा है कि उन्हें चुनावी फायदा इससे नहीं मिलेगा, बल्कि बीजेपी को इससे चुनावी फायदा हर हाल में मिलेगा। बीजेपी का ये एजेंडा रहा हमेशा से, जिसे वो पूरा कर रहे हैं, और चुनाव के पहले जो यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उससे फायदा, चुनावी फायदा भी बीजेपी को मिलता है। जरूर वो धर्म और आस्था की बात है, पर कांग्रेस ये दिखा रही है कि वो किसी भी एक धर्म की नहीं है और कम से कम जो उनका अपना वोट बैंक है वो उसे भी नाराज नहीं करना चाहती। धन्यवाद आपका प्रशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस समय हम और प्रतिक्रियाओं की कोशिश कर रहे हैं कि जो कांग्रेस के दूसरे सहयोगी दल हैं उनका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं घनश्याम तिवारी, जो समाजवादी पार्टी नेता हैं। घनश्याम जी, समाजवादी पार्टी के नेता तो जाने के लिए राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसके लिए तैयार हैं, और आपकी सहयोगी दल कांग्रेस का जो ये फैसला है उस पर, उसे आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस ने ये फैसला क्यों लिया? क्या कांग्रेस को जाना चाहिए था? नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। दो बातें महत्वपूर्ण हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक मंदिर जो अनेक संतों की दृष्टि में अधूरा है, उसके उद्घाटन में सारे लोग पहुंच जाए, तो देश के लिए एकमात्र 2024 का एजेंडा रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर का उद्घाटन दिया। लेकिन हम देखते हैं कि देश का एजेंडा इससे बहुत बड़ा है। मणिपुर अभी भी जल रहा है, जम्मू कश्मीर में समस्याएं हैं, IIT BHU की बेटियों को न्याय नहीं मिला है, साक्षी मलिक और हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिला है, और बिल्किस बानो अपनी लड़ाई खुद लड़के जीती है, लेकिन इस सरकार का अहंकार जारी है। ये सब देश के एजेंडे हैं। तो ऐसे में ये आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी देश को गुमराह करके एक ऐसे एजेंडे पे न ले जाए जो हमारी आस्था के लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन के बेहतरी के लिए, देश के लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए उससे ज्यादा महत्वपूर्ण एजेंडे हमारे सामने हैं। इसलिए इस लेकिन पर घनश्याम जी, पार्टी जी आपने सही कहा ये कि यही एक एजेंडा नहीं है, बहुत सारी चीजें जिस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये जैसा कांग्रेस कह रही है कि इवेंट है ये, और बीजेपी और RSS का है, लेकिन समाजवादी पार्टी तो इसमें जाने वाली है। किसी भी पार्टी कोई व्यक्ति नहीं है। मंदिर जाना व्यक्तिगत काफी आस्था नेता का विषय है। सपा के जाने के लिए उत्सुक हैं, बल्कि डिमांड भी कर रहे हैं कि उन्हें ले जाया जाए वहां पर, वो सब वहां पे पहुंचना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा, पार्टी कोई व्यक्ति नहीं है और मंदिर जाना व्यक्तिगत आस्था का विषय है। जब जो जाना चाहेगा अपनी आस्था के अनुसार सब परिवार जाएगा और भगवान के दर्शन करेगा। लेकिन जैसा कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला लिया है, तो सपा का फैसला भी होगा। तो कांग्रेस पार्टी ने तो एक पार्टी के रूप में ही फैसला लिया, ये तो नहीं हुआ कि व्यक्तिगत तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे चले जाएं या सोनिया गांधी चली जाएं। क्योंकि पॉलिटिकल मैसेज तो जाता है पार्टी के फैसले से। जैसा मैं समझता हूं कि लोग फैसला ले रहे हैं कि कौन व्यक्ति आमंत्रण के बाद उस समय मंदिर जाएगा, कौन उसके बाद जाएगा। कोई ये नहीं कह रहा कि मैं कसम उठा रहा हूं कि मंदिर जाना है या नहीं जाना है। लोग कह रहे हैं कि अपनी आस्था के अनुसार अपने परिवार के साथ मंदिर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के दिखावे का हिस्सा बनने के लिए मंदिर नहीं जाएंगे। बस इतना निर्णय लोग ले रहे हैं। के कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहते। भारतीय जनता पार्टी के दिखावे में के लिए मंदिर नहीं जाएंगे, अपनी आस्था को मजबूत करने के लिए मंदिर जाएंगे। कांग्रेस पार्टी को ये न्योता मिला घनश्याम जी, काफी समय भी लगा, उसके बाद अब उन्होंने इस अपने फैसले को साफ किया है कि वो यहाँ पे शामिल नहीं होंगे। तो इतना वक्त लगाया कांग्रेस ने, जाहिर है कि कांग्रेस के लिए भी ये मुश्किल फैसला रहा होगा। बीजेपी को जाहिर है कि इससे चुनावी फायदा मिलता हुआ दिखता है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर कुछ देर भी की। मुझे लगता है कि बात देरी की नहीं, बात यह है कि पिछले 20 दिनों से भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया में एक प्रोपेगेंडा बना रखा है कि हर रोज सभी से पूछो कि आप मंदिर के उद्घाटन के समय जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आमंत्रण आया हो ना आया हो, सभी से पूछते रहो। ये इसलिए कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जो देश के लोगों को ठगना चाहती है। वो चाहती है कि देश के लोग ये मानने लगे कि मंदिर के उस उद्घाटन समारोह में पहुंचना ही देश का एकमात्र एजेंडा रह गया है, और इस पर
एक ठोस राय देकर के कि हम अपनी आस्था के अनुसार मंदिर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के दिखावे में नहीं जाएंगे, इस तरह की ठोस राय देश को आश्वस्त करती है कि देश के एजेंडे और भी बड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिखावे का हिस्सा बनना देश का एजेंडा नहीं है। जी जी, धन्यवाद आपका घनश्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए। खड़गे और सोनिया गांधी अयोध्या उस उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं जाएंगे जिसके लिए आरएसएस की तरफ से न्योता आया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि वो इस इवेंट में जो उनके मुताबिक बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है उसमें वो नहीं जाएंगे और सम्मान के साथ न्योता को अस्वीकार करते हैं। Group number 6 consists of petition number 21, again filed by legislator belonging to the UBT fraction under 21B with regards to defiance of whip for the confidence motion. Group number 5 consists of petition number 22 to 24, which has been filed by legislator belonging to the Shinde faction under 21A and 21B. Group 2 consists of petition number 17, which has been filed against certain independents and members belonging to other parties under 2 subclause 2. So we shall, before I proceed with the judgment, pronouncement of the order, I would like to express my sincere gratitude towards the Honorable Supreme Court of India, which has provided an extremely guiding force by way of its order, whereby they have given a direction to the whole adjudication of the issues being decided in the proceedings today. Therefore, I would at the outset express my gratitude towards the apex court. At the same time, I would like to express acknowledgement and a big thank you to the staff of the state legislature who have assisted me and the paralegal assistance which I have received from them during the course of the conduct of these proceedings pertaining to disqualification. I would also like to appreciate the cooperation which I have got from counsels appearing on both the sides, and I shall now proceed with the pronouncement of the order. As we are aware that there are certain preliminary issues which are applicable to all the 5 groups out of the 6 groups, and therefore I shall first commence with my ruling on the preliminary issues which concern all the 5 groups. Thereafter, I shall pronounce the operative part of the orders concerning each group and the relevant and important paragraphs pertaining to each group. So we shall commence with group number 1. Preliminary issues. The Honorable Supreme Court in Subhash Desai Supra versus the Governor of Maharashtra, hereinafter referred to as Subhash Desai, was pleased to direct that the Speaker should prima facie determine who the real political party is for the purpose of adjudicating disqualification petitions if 2 or more factions claim to be that political party, and accordingly shall recognize the whip and the leader who were duly authorized by the Shiv Sena political party, keeping with the principles discussed in the said judgment. Hence, keeping in view the factual matrix and the directions of the Honorable Supreme Court, I will prima facie determine who the political party is for the purpose of adjudicating disqualification petitions if 2 or more factions claim to be that political party, and accordingly recognize the whip and the leader who are duly authorized by Shiv Sena political party. Keeping in mind principles discussed in Subhash Desai Supra, it is necessary to consider and determine the said preliminary issue before examining the merits and deciding whether respondents have incurred disqualification under the 10th schedule of the Constitution of India.
Thus, the preliminary issue that arises for my consideration before delving into the merits of disqualification petitions under the 10th schedule is, which among the two fractions was the real Shiv Sena political party, and consequently, who was the duly authorized leader and or the whip of Shiv Sena political party for the purpose of deciding the present disqualification petition. The other issue framed for my consideration in this group of disqualification petition is whether the respondents have incurred disqualification in terms of paragraph 21A of the 10th schedule of the Constitution of India on account of their alleged acts and conduct. Paragraph 84 deals with the principles which have been laid down by the Honorable Supreme Court. I am not going to read out those. Those are a part of my order. I'll come to paragraph number 85 now. Thus, what emerges from the principles laid down by the Honorable Apex Court in that the question of who the real political party is has to be considered and determined after giving due weightage to 1. The Constitution of Shiv Sena, 2. The leadership structure of the party, and 3. The legislative majority if two or more factions claim to be real political party. The question of who the real political party is hereinafter referred to as the preliminary issue. Since in these proceedings both in the previous paragraphs I have recorded the submissions made by both the parties. I will come down to my observations and conclusions with regards to the preliminary issues. As stated earlier, the decision of the preliminary issue has to be taken after careful analysis of the constitution of Shiv Sena, the leadership structure of the party and the legislative party majority. After having heard both sides on the above aspect, I now propose to proceed to record my observations and finding on the preliminary issue. As is evident from the submissions of the parties, there is no consensus on the constitution submitted to the Election Commission of India with consent of both the factions. Likewise, the parties have different point of view on the leadership structure, which has to be taken into consideration. The only aspect which is undisputed is the majority in the legislature party. Hence, to embark upon the finding on the preliminary issue, I will have to decide the relevant constitution which has to be taken into account. 2. The leadership structure which existed before the dispute arose. Further, it will also have to be determined as to when the rival factions emerged. Petitioner's assertion that the constitution of the year 2018 is the relevant constitution which has to be taken into account for the purpose of determining the preliminary issue is based on the submission that 1. The 2018 constitution has to be considered as both the parties have relied upon the 2018 amended constitution and acted thereupon. 2. The Election Commission in its order dated 17/2/2023 in dispute case number 1 of 2022 has held that both the parties were aware of the 2018 amendment and thus the said constitution of 2018 has to be taken as the constitution which is done with the consent of both the factions, as the said constitution of 2018 was never disputed prior to the initiation of these disqualification petitions and the same was never challenged. 3. Respondents have themselves admitted and relied on the said constitution of 2018. And 4. The statement of Sri Yogesh Kadam that the filing of 2018 constitution along with the respondent's reply was a mistake done by the lawyers cannot be accepted, as the said statement is an afterthought and done only with the intention to mitigate the damaging statements made by Sri Dilip Lande. To the contrary, respondents have asserted that the constitution of the year 1999 has to be the one which has to be borne in mind, as according to the respondents, the constitution of the year 2018 was never submitted to the ECI. Respondents pointed out to the letter dated 4th April 2018 by which
by way of which the petitioner based their claims of submissions of the said constitution to the ECI. By pointing out to the same, respondent submitted that both the said letters do not mention anything about the purported amendments to the constitution or submission of the same thereof to the ECI. A similar claim was made with respect to the letter dated 27/2/2018 by Shri Uddhav Thackeray in the special leave petition number 3997 of 2022. However, in the said SLP, there was no mention about the existence of any such letter dated 4th April 2018. The word submitted appearing in paragraph 168 of Subhash Desai means submitted before the ECI, as is evident from the further part of the said paragraph, which the petitioner has conveniently ignored. The respondents have further submitted that 2018 Constitution has been wrongly annexed as a document. The stand of the respondent on the 2018 Constitution has always been that it is unconstitutional and was secretly manufactured by Shri Uddhav Thackeray in cahoots with Mr. Anil Desai. This stand has been specifically taken in the reply filed by Shri Eknath Shinde before the Honorable Supreme Court in SLP number 3997 of 2023, way back on 16/3/2023, much before filing of the replies before the Speaker in August 2023. Further, even the additional replies filed on 25/10/2023 in the present proceedings, the aforesaid petition has been reiterated by the respondents. After having considered the submissions advanced by both the parties on the question as to which is the relevant constitution for the purpose of determination of the preliminary issue, I have come to the following conclusion. A. As per the Honorable Apex Court, if both the factions have submitted different versions of the constitution of the party, then in that case, what has to be taken into account is the constitution which was submitted to the ECI with the consent of both parties before the rival factions emerged. Before recording further conclusions, I find it imperative to reiterate that, pursuant to the initiation of these disqualifications, the Maharashtra Legislature Secretariat had vide letter dated 7 June 2023 requested the Office of the Election Commission of India to provide a copy of the party constitution / memorandum / rules and regulations. तो 16 विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर सुना रहे हैं फैसला, और इसमें आपको बता दें कि दोनों तरफ से 34 पिटीशन दायर की गई थी जिसके ऊपर ये फैसला आना है। और इस फैसले पर सबकी नज़र टिकी हुई है क्योंकि दोनों तरफ के जो दोनों गुट है उसके लिए बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, चाहे वो उद्धव ठाकरे का गुट हो या फिर एकनाथ शिंदे की सरकार हो। अब ये जो फैसला आएगा उसके बाद देखना होगा कि क्या एकनाथ शिंदे की सरकार पर कोई खतरा बनता है, और अगर ये उनके हित में फैसला आता है और उद्धव ठाकरे के खिलाफ जाता है तो उद्धव ठाकरे गुट या उद्धव ठाकरे कि राजनीतिक भविष्य उनकी पार्टी का जो है वो आगे क्या हो सकता है। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता का ये मामला है जिस पर फैसला सुना रहे हैं राहुल नार्वेकर। जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के कई विधायकों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की थी। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील सिंह मौजूद हैं। सुनील, ये फैसला आने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि कई पिटीशन हैं, राहुल नार्वेकर फैसला सुना रहे हैं और इसमें बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है दोनों पार्टियों के लिए कि क्या उद्धव ठाकरे ने इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर कर दी है ये ऑब्जेक्शन रेज करते हुए कि इस बीच में राहुल नार्वेकर 2 दफा मिल चुके हैं एकनाथ शिंदे से और उनका ये बयान है कि जब जज खुद ही मिला हो उससे जिसके खिलाफ ये मामला है तो फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो क्या ये जो गुट है उद्धव ठाकरे का वो क्या कह रहा है? देखिए, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जो कि 4:30 बजे फैसला सुनाने वाले थे, बहुत देर तक अपने चैम्बर में वो रहे और वहाँ मीटिंग होती रही। जो जानकारी मिली अभी कुछ देर पहले ही वो सेंट्रल हॉल में आए हैं और अब उन्होंने फैसला जो है सब पढ़ना शुरू कर दिया है।
और सबसे पहले तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से आभार माना है और अलग अलग, चूँकि इसमें 34 याचिकाएँ थी तो उसके हिसाब से अलग अलग वो उसका पठन कर रहे हैं और रेफरेंस दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर में हम उम्मीद करते हैं कि फैसला आ जाएगा। स्वाभाविक तौर पर इस दौरान दोनों दल जो है कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे बाला साहेब गुट और साथ ही एकनाथ शिंदे गुट की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि फैसला क्या आएगा, किसके पक्ष में आएगा, ये जरूर उत्सुकता भी लगी हुई है और एक तरह से थोड़ा सा डर भी दोनों में बैठा हुआ है कि क्या फैसला होगा, क्या उनकी सदस्यता रहेगी या चली जाएगी। वैसे सुबह से हम बात कर रहे थे तो अगर जो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के जो लोग हैं वो बहुत ही आत्मविश्वास में थे। खुद एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि ये फैसला जो है मेरिट पे आएगा और मेरिट हमारे साथ है, क्योंकि बहुमत जो है हमारे साथ है। सबसे ज्यादा मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ, ये फैसला आएगा, वापस आएंगे। इधर सुनते हैं कि स्पीकर राहुल नार्वेकर इस समय कहां पहुंचे हैं फैसला सुनाने की प्रक्रिया में। Of the special leave petition filed by Mr. Uddhav Thackeray before the Honorable Supreme Court, challenging the ECI decision SLP number 3997 of 2022, I find that exactly same claim has been made about the letter dated 27/2/2018, and there is no mention about the new letter of 4th April 2018. Accordingly, said letter of 2/7/2018 is on the website of the Election Commission of India. However, there is no document relating to the Constitution annexed to it. Hence, on this ground also, petitioner's submission that the Constitution of the year 2018 has to be taken into account cannot be accepted. Petitioner's submission that submitted before the Speaker, petitioner's submission that into inverted submitted before the Speaker would mean into inverted annexed by the petitioner and the respondents in their respective petitions and replies thereto cannot be accepted, as there is a clear provision under the 1986 rule where the leader has to submit the party constitution. Rule 3 subclause 1 subclause B of 1986 rule mandates that the leader into inverted shall furnish into inverted a copy of the rules and regulations, whether known as such or as constitution or any other name, of the political party concerned. Further, Rule 3 subclause 4 contemplates that whenever any change takes place in the information furnished by the leader of the legislature party under Rule 3 subclause 1, he shall as soon as may be thereafter, and in any case within 30 days from the date on which such change has taken place, or within such further period as the Speaker may for sufficient cause allow, furnish in writing information to the Speaker with respect to such change. Thus, the submission of Constitution before the Speaker has to mean submission under Rule 3 of 1986 rules. However, till date, Shiv Sena has not submitted any constitution on the record of the speakers of the Speaker under the said Rule 3. In view of the above observation and finding, I need not further analyze any other submission in this regard made by the parties, and I hold that the Constitution of Shiv Sena provided by Election Commission of India, Vide, letter dated 22nd June 2023, is the relevant Constitution of Shiv Sena for determination of the preliminary issue as to which faction is the real political party. Constitution of Shiv Sena held to be the relevant constitution is hereinafter referred to as the SS Constitution. The leadership structure relevant for the determination. Learned Senior Advocate Mr. Kamath's submission that the leadership structure which is relevant for the purpose of deciding the preliminary issue is the leadership structure which is reflected in the communication dated 27 February 2018 and 4th April 2018 made to the Election Commission of India pursuant to the elections held on 23rd January 2018 is based on the petitioner's submission recorded in paragraph 89A to G herein above. Initially, the petitioner relied on the affidavit submitted to the ECI of the then office bearers of Shiv Sena
produced along with the affidavit in lieu of examination of chief to show that Shri Uddhav Thackeray had support of the majority in the organization. Respondents objected to such production on the ground that it is not permissible to produce affidavits of others along with petitioner's own affidavit in lieu of chief examination without the author of the said affidavits subjecting themselves to cross-examination. In any event, during the arguments, Mr. Kamath did not rely on these affidavits and limited his submissions to the 2018 leadership structure as available on the ECI website. Mr. Jethmalani, in turn, focused his submission to buttress the ground that the said leadership structure of 2018 cannot be considered and relied upon for the purpose of determining the preliminary issue, as the said leadership structure is not in conformity with the constitution of Shiv Sena, which is on record of the ECI, and thus the same would be contrary to the findings of the Honorable Supreme Court in paragraph 168 of Subhash Desai. Mr. Jethmalani further relied on the legislative party leadership to submit that the legislative party also forms part of the leadership structure, as it is not only mentioned in the SS Constitution, but there is no dispute regarding the said members being part of the Pratinidhi Sabha under the SS Constitution. After having considered the submissions advanced by both the parties on the question as to which is the relevant leadership structure for the purpose of determination of the preliminary issue, I have come to the following conclusion. The submission of Mr. Kamath, the jurisdiction under the 10th schedule, only mandates a prima facie adjudication as to what the leadership structure of the political party was at the relevant time, and it does not extend to an inquiry as to whether or not the leadership structure available on the record of the ECI was pursuant to a validly held election is a correct position, and hence I concur with the same. Petitioner's submission that in these proceedings the respondents cannot challenge the organizational election results available on the record of the ECI, as the 10th schedule does not permit the raising of any such defense, is a correct position, and hence I am in agreement with the same. Respondent submission that the leadership structure of 2018 cannot be considered and relied upon for the purpose of determining the preliminary issue, as the said leadership structure is not in conformity with the constitution of Shiv Sena, which is on record of the ECI, does not arise at this juncture, as it is a submission which has to be considered while determining whether the said leadership structure can be relied upon for the purpose of determining which faction represents the real political party, which would be dealt with at the appropriate juncture. The only question which is to be determined in the current part of the order is what and who all constituted leadership structure of Shiv Sena at the relevant time. Respondents have led detailed evidence, and despite being confronted during cross-examinations, they have been able to demonstrate that no organizational elections were held on 23/1/2018. On the contrary, in the affidavit in lieu of examination of Chief of Shri Sunil Prabhu, PW1, has stated that organizational elections were held on 23/1/2013 and 23/1/2018. However, Shri Sunil Prabhu has not claimed any personal knowledge of the same or and whether he was present during the said elections. During his cross-examination, he was confronted with the letter dated 28/1/2013. Thereafter, a specific question was posed to him by Mr. Jethmalani as to whether he voted in the said election, to which he responded in the affirmative. The contents of the said letter clearly stated that all the candidates were declared unopposed. The contradiction was also put to the witness by Mr. Jethmalani in cross-examination. However, no justification for the same was put forth by the witness. In view of the above evidence and records before me, prima facie indicate that no elections were held in the year 2013 as well as in the year 2018. However, I, as the Speaker, exercising jurisdiction under the 10th schedule, has a limited jurisdiction
and cannot go beyond the record of the ECI as available on the website, and hence I have not considered. स्पीकर राहुल नार्वेकर अपना फैसला सुना रहे हैं विधायकों की अयोग्यता पर, लेकिन एक बात अभी तक जो सामने आई है, उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग के सामने जो संविधान पेश किया गया वही मान्य है और ये 1999 का संविधान है। 2018 के संशोधित संविधान को उन्होंने ठुकराया है, जिसको उद्धव ठाकरे गुट जिसे रेफर किया था, लेकिन जो पहले का संविधान है 1999 का, उसी को मान्य बताया है और ये भी कहा है कि दोनों गुटों को इस पर विश्वास है और असली पार्टी कौन है ये 1999 के संविधान से ही तय होगा। Structure identifiable from the said Shiv Sena constitution. So the Shiv Sena constitution is relevant to the extent of identifying the leadership structure. Leadership structure as a criteria to determine who was the real political party. As I have already held, which is the relevant constitution and the leadership structure of the Shiv Sena to be taken into account for deciding the preliminary issue, I now have to see whether the relevant leadership structure read with the SS constitution provides answers to the question which faction is the real political party and consequently determine the same. The UBT faction made, there are submissions made which have been recorded of both the sides, which are at paragraph 113 and 114 of my order. In view of the above recorded submissions of the parties, there emerges two further questions. Whether 2018 leadership structure is in conformity with the constitution of Shiv Sena. Number two, whether will all the Paksha Pramukh whether will of the Paksha Pramukh and or majority leaders in the 2018 leadership structure could be said to be synonymous with the will of the political party. So we further have to derive get answers to two more questions. The primary one being whether 2018 leadership structure is in conformity as provided by the constitution, and number two, whether the will of the Paksha Pramukh and or majority of the leaders reflects the will of the political party. As there are contrasting submissions on the question, it is necessary to peruse the SS Constitution and the 2018 leadership structure and then record a finding as to whether the 2018 leadership structure is in conformity with the Constitution of the Shiv Sena. Thus, I have taken a comparative look at the 2018 leadership structure and the SS Constitution and have arrived at the following observations and conclusions. A. 2018 leadership structure mentions Shiv Sena Paksha Pramukh into bracket president as the highest office of the SSPP. However, in the SS Constitution, the highest office of the Shiv Sena political party is Shiv Sena Pramukh, but the said constitution distinguishes highest office and the highest authority and provides that Rashtriya Karyakarni is the highest authority whose decision shall be final. Shiv Sena SS Constitution provides that the members of the Rashtriya Karyakarni shall be called as Shiv Sena leaders and provides for a total number of 19 members, out of which 14 are to be elected by the Pratinidhi Sabha and the rest of the 5 members are to be appointed by Shiv Sena Pramukh. However, the 2018 leader structure envisages only 13 members in the Rashtriya Karyakarni, out of which 19 are to be elected and the remaining 4 are to be appointed. SS Constitution provides for a total number of 21 deputy leaders, out of which 17 are to be elected by the Pratinidhi Sabha and the rest of the 4 members are to be appointed by Shiv Sena Pramukh. However, the 2018 leader structure envisages 33 deputy leaders, out of which 21 are to be elected and the remaining 12 are to be appointed. The 2018 leadership structure provides for 3 categories of office bearers, vis-a-vis secretary, samanvayak and sanghatak. However, the constitution of Shiv Sena provides for 3 categories of office bearers, vis-a-vis president, sarchitnis
General Secretary, Koshadhyaksha, Treasurer. From the observation recorded in the preceding paragraphs, it is evident that the 2018 leadership structure is not at all in conformity with the constitution of Shiv Sena. In view of this finding alone, it could very well be concluded that the 2018 leadership structure, which is not in conformity with the constitution of Shiv Sena, cannot be taken as the yardstick to determine which faction was the real political party at the relevant point of time. In view of the same, I have come to the conclusion that the 2018 leadership structure read with the SS Constitution does not provide a reliable outcome and or answer the question which faction is the real political party, and hence cannot be relied upon to determine the said preliminary issue. Nevertheless, I am inclined to look at the second question regarding paragraph 115 here and above, where will of the Paksha Pramukh and or majority leaders in the 2018 leadership structure could be said to be synonymous with the will of the political party, so as to not leave any stone unturned in arriving at a decision. The determination of this question arises out of the alternate submissions made by the UBT faction that the 2018 leadership structure has to be taken ex facie, and the determination of which faction was the real political party has to be solely based on the said leadership structure without a comparison of the said structure with the leadership structure provided for in the constitution of the Shiv Sena. The said proposition would run counter to the principles laid down by the Honorable Apex Court in Subhash Desai Supra, where it was specifically provided that the leadership structure which has to be taken into consideration while determining the real political party has to be identifiable by the relevant constitution. Thus,